Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on monthly policy review, also known as MPR, which is being released by the PRS Legislative Research. This is a very important aspects in your preparation, where some of the most important and relevant news will be discussed that was reported in the PRS report. PRS is released every month, so we'll see some of the most important article that is again going to be relevant for prelims as well as for the mains examination. So without any further delay, let's get started. And before I proceed, just a brief about PRS Legislative Research. What is this organization all about? This was actually founded in 2005. It's an independent research initiative. It aims to improve transparency and strengthen the legislative process, and it assists member of parliament and member of legislative assembly. For more details, you can refer to their websites also, which has a good insight and content for the examination. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So the first topic is guideline for strengthening the pharmaceutical sector. This news is again important for General Studies paper 3, both in General Studies paper 2 as well as in General Studies paper 3. So we'll understand the detail about the government guideline in terms of strengthening the pharmaceutical industries. The Department of Pharmaceutical, which is a nodal body to take care of entire pharmaceutical activities in our country, which is under the Ministry of Chemical Fertilizers, they have notified a guideline for a scheme called as strengthening the pharmaceutical industry in India. So two things important. First, that the Department of Pharmaceutical is a nodal department to take care of entire pharmaceutical industry in India, which works under the administrative control of Ministry of Chemical and Fertilizer and not Ministry of Health. तो कई बार यूपीएससी इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकती है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है. सो मेक श्योर यू नो दैट दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स. So what is the objective of this scheme? The first and foremost is to strengthen the existing infrastructure facilities by the creation of common facilities. तो ये ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी जो कॉमन फैसिलिटीज को प्रमोट करे एंड अपग्रेडेशंस ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट इज एसएमईज up to the required जो regulatory standards हैं उनको meet करने के लिए. So this is the core more objective of the scheme. Now key features. What are the key features? The scheme has been divided into 3 important sub schemes. तो इस scheme को जो है 3 sub schemes में divide किया गया है, which I'll be discussing one by one. So the first is assistance to pharmaceutical industries and common facility, which is also known as APICF. What is this? This aims to seek and strengthen the pharmaceutical cluster capacity by creating a tangible asset. So this is the first core idea behind APICF. Now second sub scheme is pharmaceutical technology upgradation assistance scheme. ये seek करेगी to facilitate the micro, small and medium enterprises of proven track regard to the upgrade their technology meet WHO GMP standards. तो ये basic standard है WHO GMP की जिसको meet करना mandatory हुआ. And this pharmaceutical technology upgradation assistance scheme is also known as PTUAS. Now the last sub scheme is pharmaceutical and medical device promotion and development scheme, which is also known as PMPDS. तो यहाँ पे main objective दो हैं PMPDS के. First is to promote the pharmaceutical and medical device industry to bring the industries leader, जो भी industries leaders हैं उनके research and development state of art technology को incorporate की जाए, चाहे वो academic या हो, leaders हो, policy makers हो, and share their knowledge and experience which will help to build an enhanced version of the industry. Facilitating the growth and development of this sector, conducting studies, organizing awareness campaigns and creating a database. So these are some of the core objectives behind pharmaceutical medical devices promotion and development scheme. Now giving you other things important, that is the Pharmaceutical Procedures Identification Bill 2022. This was a bill which was long debated in the parliament. इस बार की भी discussions में काफ़ी ज़्यादा इसको highlight किया गया. And I have already discussed this news in a daily news analysis, although I'll be discussing in detail that क्या है इस bill के important provisions. So the Criminal Procedures Bill 2022 was passed by the parliament and the bill replaces Identification of Prison Act 1920 जो कि independence से पहले की act है. So definitely unnecessary changes was incorporated, but कुछ concerns भी हैं stakeholders के with regards to this bill, which call for the breach of privacy of an individual. And Supreme Court in KS Puttaswamy case has already ruled that
right to privacy, something which is pivot. So the act authorized the collection of certain identification information of an individual person who is either convicted or been taken into custody for the police investigations. तो बिल ने अपने एम्बिट को एक्सटेंड करते हुए ये कहा है that details of such person can be taken and even it authorized the National Crime Record Bureau जो NCRB है वो एक नोडल बॉडी होगी पूरे डेटा कलेक्शंस करने के लिए जिसको इस बिल के टर्म में मेजरमेंट कहते हैं. सो द इंटायर डेटा विच वुड बी कलेक्टेड वुड बी स्टोर्ड विद द एनसीआरबी और उसको प्रिजर्व करने की जो अथॉरिटी होगी वो एनसीआरबी के ही पास होगी. नाउ डिटेल अबाउट द कन्विक्ट एंड द अदर पर्सन, किन किन लोगों की डिटेल लेनी होगी. सो द एक्ट परमिट द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, स्पेसिफाइड डिटेल्स अबाउट द कन्विक्ट, उनके फिंगरप्रिंट के इंप्रेशंस होंगे, फुटप्रिंट के इंप्रेशंस होंगे. एंड द बिल एक्सपैंड दिस लिस्ट टू बी कलेक्टेड. कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड होनी है, दैट इज पाम प्रिंट इंप्रेशंस, iris and retina scan, behavioral attributes such as signature and handwriting. उसके अलावा जो बायोलॉजिकल सैंपल हैं, फिजिकल सैंपल्स हैं सच एज ब्लड, सीमेन, हेयर सैंपल, स्वैप्स, उसके भी एनालिसिस के लिए डेटा रखे जाएंगे फॉर दोज पर्सन हु वाज कन्विक्टेड इन द हीनियस क्राइम एज वेल. Now person जो whose details may be taken, government has specifically come out with the details कि किन किन लोगों की details measurement लेनी होगी. As per the act, the following person may be required to give their photograph and specific details. Who are that person? First, the person convicted in certain offences, जहाँ पे जो punishable offense है वो minimum अगर 1 साल के लिए punishable offense है, उस कैटेगरीज में बेसिकली उन लोगों की डेटाज लेनी होगी. ऐसी पनिशमेंट जो कोर्ट के सीआरपीसी में 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, उसी पनिशमेंट के लिए सिर्फ वो वैसे लोग एलिजिबल होंगे. एंड पर्सन order to give security for good behavior or maintaining the peace under the code of criminal code of procedures 1973, इसको CRPC भी कहते हैं. Now person arrested in connection with any offense with the punishable for at least 1 year regress would be eligible for this. उसके अलावा बिल ने अपने एम्बिट को बढ़ाया है और वैसे लोगों को भी इंक्लूड किया है जो कन्विक्ट्स हैं, अरेस्टेड पर्सन्स हैं, एज वेल एज पर्सन अंडर डिटेनी और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो लोग हैं उन लोगों की भी डेटा ली जाएगी. सो दिस वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द अपोजिशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स कि इन लोगों की क्यों लेना है, बिकॉज अंटिल रूल्स ऑफ लॉ में आप जब तक गिल्टी कन्विक्टेड नहीं होते हैं तब तक आप यू आर नॉट गिल्टी, राइट. तो वाई दोज पीपल हु आर अरेस्टेड स्टिल नॉट कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ने भी उनको कन्विक्ट नहीं किया, किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दी है, तब उनके सैंपल क्यों लिए जा रहे हैं. दिस इज अ कंसर्न एंड दिस इज अ लेजिटिमेट कंसर्न which I personally feel should be taken into the consideration. Now arrested person will be not obliged to give their biological samples if they have committed the offense under the woman. और अगर कोई भी वैसे इंडिविजुअल को तभी बायोलॉजिकल सैंपल देनी होगी जिनको अरेस्ट किया गया है अगर वो ऐसे ऑफेंस हों जो कि वुमेन और चाइल्ड के ऊपर है. तो ऐसे कोई इंडिविजुअल जिनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए अरेस्ट किया गया है बट उन्होंने क्राइम किया है अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, देन देयर बायोलॉजिकल सैंपल वुड बी इंक्लूडेड. सो दिस इज अ टेक्निकलिटी ऑफ दिस बिल. आप इसको अच्छे से समझ लें बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो. नाउ रिटेंशन ऑफ डिटेल्स की अगर बात की गई है, एज आई हैव टोल्ड यू द एनसीआरबी इज अ नोडल बॉडी जो कि ये सारी डेटा को रखेंगी. सो दे विल कलेक्ट द डेटा फॉर 75 ईयर्स. अगेन दिस वॉज अ कंसर्न बिकॉज इंडिया में जो एवरेज एज है एक इंडिविजुअल की, अगर आप एवरेज एज देखो लाइफ स्पैन की, तो दिस इज 67 ईयर्स. सो दिस वॉज अगेन अ बोर्ड ऑफ कंटेंशन कि 67 ईयर जहाँ एवरेज है वहाँ 75 ईयर्स के लिए क्यों डेटा कलेक्ट किया जा रहा है. अगेन सम टेक्निकल इशूज. नाउ द रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड फॉर अ पर्सन. किन किन लोगों की जो डेटाज हैं वो बाद में एनसीआरबी के डेटाबेस से हटा दी जाएगी, वो कुछ स्पेसिफिक पर्सन होंगे. वैसे पर्सन दोज हु हैव बीन प्रीवियसली जो उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है, and those people who have been released on trial or discharged or acquitted by the court after exhausting all the legal remedies. तो इन लोगों की जो डेटाज हैं वो एनसीआरबी रिकॉर्ड में नहीं रखेगी. Now CA, CWA and CS Amendment Bill 2021 again very significant. So the Chartered Accountancy Cost of Work Accounts and the Company Secretaries Amendment Bill was passed by the Parliament recently. और ये बिल जो है Chartered Accountancy Act 1949, कॉस्ट वर्क अकाउंट 1959 और जो कंपनीज एक्ट है 1980, उन सारों चीज़ों को अमेंड करती है, रेगुलेट करती है. सो द 3 एक्ट प्रोवाइडेड द रेगुलेशन फॉर द प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंट्स और जो कंपनी सेक्रेटरीज के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या फिर इनके जो प्रोफेशनल काम करने के तरीके हैं उनको रेगुलेट करती है. द बिल सीक्स टू स्ट्रेंथन द डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म अंडर दिस एक्ट
and it will definitely provide for a time-bound disposal of the cases against the member and their professions. कुछ की फीचर्स जो आपके लिए एसेंशियली जानना है ज़रूरी एज एन एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज. फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. जो करेंटली मेंबर्स हैं, these professionals are required to register with their respective institutions. As per the bill, the firm will also be required to register with the institution by making applications जो कि respective council of the institutions के पास होंगे. Now, the council must maintain a register of the firm containing details of such pendency and actionable complaint for imposing the penalty against the firm. तो ये कुछ registrations को लेकर के बातें हैं. Now, disciplinary directorate की अगर बात करें, under the act, respective council of 3 institutions has to come up and constitute a disciplinary directorate, जिसको DDB कहते हैं, disciplinary directorate. This would be headed by the director who is an officer of an institute, right? तो उन्हीं के hierarchy से जो वर्क एक्सपीरियंस लोग कैरी कर रहे हैं बैक एंड, मतलब जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, उन्हीं लेवल, उन्हीं लोगों को डायरेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे. द बिल एक्ट ईच डायरेक्टरेट मस्ट बी इंक्लूडेड to the joint directors. Now under the act, जो कंप्लेन अगर रिसीव होती है किसी भी डायरेक्टर को, तो प्राइमा फेसाई देखनी है कि whether it is misconduct or not, and depending upon that it has to take a action. तो डिसिप्लिनरी बोर्ड जो है, जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, वो रिपोर्ट करेगी डिसिप्लिनरी कमेटी को. एंड द बिल अमेंड दिस पावर टू द डायरेक्टरेट ऑफ इंडिपेंडेंट इनिशिएशन इन्वेस्टिगेशन बाय अ मेंबर ऑफ. Now the director must decide whether जो complaint है that is actionable under within 30 days or not after receiving a complaint, because they have to take action immediately and within 30 days it has to be disposed of. Now the complaint is actionable, director must submit a preliminary examination report to the board of committee, or within 30 days this has to be done, right? And under the act, the complaint, if permitted with the board committee, this will also provide a complaint filed by the director will not be withdrawn under any circumstances. Now, RBI director for regulating RBI directions for regulating the microfinances loan. RBI ने एक डायरेक्शन इश्यूज की है जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर द माइक्रो फाइनेंसेस लोन की बात की गई है. दिस इज अ न्यू रेगुलेशन कमिंग अप फ्रॉम द RBI. एंड माइक्रो फाइनेंस लोन इज अ कोलेटरल फ्री लोन गिवन टू एन हाउस होल्ड विथ एनुअल इनकम अप टू 3 लाख रुपीज, राइट? और रेगुलेटेड एंटिटीज जो होंगे उसमें कुछ चीज़ों की डायरेक्शन इंक्लूड की जाएगी, लाइक कमर्शियल बैंक वुड बी देयर, urban cooperative banks, non-banking finances companies, and the direction would be applicable from 1st of January 2022. कुछ key features अगर बात करें इस माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर के, फर्स्ट इज द रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस. तो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटी है दे मस्ट हैव अ पॉलिसी रिगार्डिंग द रीपेमेंट ऑफ अ लोन ऑब्लिगेशन विच द हाउस होल्ड एज द परसेंटेज ऑफ अ मंथली इनकम हैज टू बी देयर, and this will be subject to a maximum limit of 50% of the monthly household income. तो ये कुछ रीपेमेंट की ऑब्लिगेशंस होंगी. उसके अलावा प्राइसिंग ऑफ लोन की अगर बात करें, सो द रेगुलेटेड एंटिटी मस्ट हैव अ पॉलिसी ऑन प्राइसिंग ऑफ अ माइक्रो फाइनेंस लोन. किन किन जगहों पे ये सच पॉलिसी इंक्लूड करेगी, किन किन चीज़ों के? फर्स्ट इज वेल डॉक्यूमेंट इंटरेस्ट मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग ऑल इंक्लूसिव इंटरेस्ट रेट. उसके अलावा भी डिलिनेशन ऑफ कंपोनेंट फॉर द इंटरेस्ट रेट, चाहे वो कॉस्ट ऑफ फंड हो, रिस्क प्रीमियम हो, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी. सीलिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट होगी सो दैट देयर इज अ कैपिंग एंड इवन it do not exceed and it is affordable in nature. Interest rate and other charges should be not extraordinary and will be subject to scrutiny by the RBI. And the last is any penalty for delayed payment would be applicable to the overdue amount, which is for the entire loan amount. Now, recovery of loan कैसे होती है? अगर किसी केस में ये NPA में जाती है, then how recovery would be done? So each regulated entity has to formulate a mechanism to identify the borrower जो रीपेमेंट लिए डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. रिकवरी वुड बी मेड एट डेजिग्नेटेड प्लेस डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द बोरोवर्स एंड द रेगुलेटरी एंटिटी. नाउ रेगुलेटरी एंटिटी एंड इट्स एजेंट मस्ट engage in the harsh method for recovery which include use of threatening and abuse languages. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये कहा गया है harassing friends or relative and the borrowers and punishment in the name of the borrower. So agent must not engage in all these activities because these are the malpractices that we have seen in terms of recovery of a loan. Now, National Land Monetization Corporation. So, Union Cabinet has recently approved setting up of National Land Monetization Corporation, also known as NLMC. NLMC जो है ये undertake करेगी monetization of surplus land and building asset of the central public sector enterprises, जो CPSEs हैं उनके लिए.
Now, NLMC would be wholly owned by the central government with an authorized capital of 55 lakh. Basically, this is 5,000 crore rupees. Just to correct you, this is 5,000 crore rupees. Now, it will also own, hold, and manage the monetized surplus of the land, building asset CPSE under the close and surplus of the non-core land asset of the CPSE in a strategic disinvestment. So, जो खास करके मैनेजमेंट है इसकी, उसको ओनिंग है, होल्ड है, मैनेज है, ये सारी चीज़ें मॉनिटाइज सरप्लस सीपीएससी में देख के की जाएंगी. Now, NLMC will advise the support CPSE for the another government entities and identification, जहाँ पे surplus of core asset would be taken into consideration for maximum value realizations. और board of directors से अगर बात करें, it will consist of senior central government officer and eminent expert. Professional would be hired from the private sector and or they would be working on the contract basis. Further, ये entity जो है administrative control करेगी by the Department of Public Enterprises. So if it is being asked in examination कि administrative control किसके पास है, correct answer would be Department of Public Enterprises. Now some benefits of NLMC. So this will provide and undertake monetization surplus land building assets of the CPSC and other government agencies, and it will help to generate substantial revenue by monetizing unused and underused assets. Now, as for withdrawal from some parts of Assam, Manipur and Nagaland, Ministry of Home Affairs ने recently announced किया है कि जो disturbed area हैं under the Arms for Special Power Act 1958, so कुछ parts में आसाम, नागालैंड और मणिपुर में उसको reduce किया जाएगा, कुछ districts में हटाए जाएंगे. Reduction will take place with effect from 1st of April 2022. क्या है AFSPA के बारे में अगर बताएं, I think most of you must be aware, but just to give you an idea, जो आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट है वो एम्पावर करती है गवर्नर को ऑफ द स्टेट्स और द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर होल पार्ट और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट टू बी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. और द डिस्टर्ब्ड एरिया जो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज हैव सर्टेन स्पेशल पावर. दिस इंक्लूड द पावर टू ओपन फायर एट इंडिविजुअल वायलेटिंग द लॉज विच प्रोहिबिट, और असेंबली ऑफ 5 or more people person is prohibited, कैरिंग आउट वेपन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. और जो एक्शंस ली जाएगी आर्म्स फोर्स पर्सनल के द्वारा वो अगेन सब्जेक्ट टू इंक्वायरी नहीं होगी. अगर इंक्वायरी करनी भी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मैंडेटरी होगी, राइट. सो दिस आर द पावर दैट इज एनविसाज्ड अंडर द आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट. नाउ किन किन स्टेट्स में अब जो आसपा की कंट्रोल है वो कम की गई है. आसाम में ऑलमोस्ट 23 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है और 1 डिस्ट्रिक्ट से पार्टली रिमूव की गई है. मणिपुर में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे अब आर्म्स फॉर स्पेशल पावर एक्ट नहीं होगी. नागालैंड में ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं फ्रॉम विच द आसपा हैज बीन रिमूव्ड. नाउ गाइडलाइन फॉर PhD with 4-year undergraduate degree program. So the University Grant Commission has recently notified the draft University Grant Commissions जहाँ पे minimum standard और procedures की बात की गई है for awarding a PhD degree, and this regulation is for 2022. So draft regulation है that has been framed under the provision of University Grant Commission Act 1956, और ये जो एक्ट थी वो एम्पावर करती है यूजीसी को टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर गेटिंग इंस्ट्रक्शन इन एनी डिग्री बाय और यूनिवर्सिटीज, राइट. इवन हाउ टू टेक एडमिशन, ये सारी चीज़ें इसी से गाइडलाइन में. रेगुलेशन विल अप्लाई टू ऑल यूनिवर्सिटीज. एवरी डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस, एफिलेटिंग कॉलेजेस वुड अलाउड टू ऑफर द PhD प्रोग्राम. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं मैं आपको वो बताता हूँ. सो व्हाट आर द की फीचर्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने 2-year सेमेस्टर और 4-year सेमेस्टर मास्टर डिग्री में किया है, 4-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है, सारे लोग एलिजिबल होंगे विद अ मिनिमम ऑफ 55% टू परस्यू फॉर द PhD. Candidate who have cleared MPhil courses with at least 55% of mark are eligible for the PhD program, and those students who are enrolled in 4-year undergraduate program, bachelor degrees में है, उनके CGPA के 7.5 के ऊपर है, तब वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं PhD के प्रोग्राम में, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. दे विल बी सेविंग द मास्टर डिग्रीज. रिलैक्सेशंस की अगर बात करें, द रिलैक्सेशन ऑफ 5% वुड बी अलाउड टू द कैंडिडेट फ्रॉम ST/SCs इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, and those who have obtained their master degree before September 1991. Procedures of admissions क्या होंगे? University shall admit the PhD students through national eligibility test, NEET के exams होंगे, and even the entrance test conducted through the level of individual universities. 60% जो total vacant seats है would be filled by any NEET और junior research fellowship जो qualification students हैं उनसे, और बाकी के जो 40% होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज कंसर्न.
तो ये कुछ प्रोसीजर्स थे with regards to the admissions. So this was all about for the MPR for the month of March. We have lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis, IAS GAZETTE magazine which you can download from our website, FCA, PIB, MPR we have already discussed, योजना और कुरुक्षेत्र के जो समरीज हैं वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे. So do check it out. We have lot more facilities for you, lot more initiative that will help you to sail through this journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.